श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमखण्डे अथ चतुर्थोऽध्याय। ऋषिऊचु। सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिताः दुता कथा धन्या तु शाम्भवी माया तद्धिनं चराचरं गत्योर्गण्यो शम्भो स्वयमात्मेच्छया विभो किं चकार मुनिकृत्रो नारदास्मरविह्वला। श्रुत्वाच विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयो शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्षाथ स्वरूपं गिरिशेच्छया शिवेच्छया न प्रबुद्धा संवृत्वा हरिकृतच्छलं क्रोधं दुर्विषहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। उवाच वचनं क्रुद्धा समेत्य इव पावका दुरुक्तिगर्भितं व्यङ्गं नष्टज्ञान शिवेच्छया। नारदुवाच हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहना करोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशया मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा असुरेभ्यो पायस्त्वं वारुणीमृतं नहि चेति पिबैनं विषं रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरा भग्नेष्ठा किला माया त्वव्याजरते हरे गतिसत्पटा ते प्रिया विष्णु विशेषता साधु स्वभावो न भवान् स्वतन्त्र प्रभुना कृतं समुचितमेव शिवेन परमात्मना तत्प्रभावबलं ध्यात्वा स्वतन्त्रकृतिकारका त्वदिति सुस्माज्ञाय पश्चात्तापं वापस विप्रं सर्वोपरि प्राह स्वोक्तवेद प्रमाणकृता तज्ज्ञातवाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि त्वद्बलात् यथा न कुर्या कुत्रापीदृशं कर्म कदाचन अद्यापि निर्भयस्त्वं हि सङ्गनातस्सर्वस्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं स्वकृत्कर्मणा। इत्थमुक्त्वा हरिसोऽथ मुनिर्माया विमोहिता शशाप क्रोध निर्विण्णो ब्रह्मतेज प्रदर्शन स्त्रीकृते व्याकुलं विष्णो मामकाशी विमोहका अन्वकाशी स्वरूपेण येन कापट्यकारकृत तद्रूपेण मनुष्यत्वं भव तद्दुःखभुक्खरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिना त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखद मनुष्यगतिप्रायो भवाज्ञानविमोहिता इति शप्त्वा हरिमोहा नारदो ज्ञानमोहिता विष्णुर्जग्राहं तं शापं प्रशंसं शाम्भवीमजाम् अथ शम्भुर्महालीलो निष्कर्ष विमोहिनीं स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्यभवद्यथा अन्तर्हितायां मायायां पूर्ववन्मितिमान्भूत नारदो विस्मितमना प्राप्तबोधो निराकुला पश्चात्तापं वाप्याति निनित स्वमुर्मुहुः प्रशंसस तदा मायां शाम्भवी ज्ञानिमोहिनीम् अथ ज्ञात्वा मुनि सर्वं मायाविभ्रमात्मना तत्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः हर्युपस्थापिता प्राह वचनं नष्ट दुर्मति मया दुरुक्तप्रोक्ता मोहितेन कुबुद्विना दत्तशापोऽपि ते नाथ वित्तथं कुरुतं प्रभो महात्पापं कार्शं हि यास्यामि निर्यं ध्रुवं कम्पायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तमादिशा येन पापकुलं नर्षे निर्यो न भवेन्न मम इत्युक्त्वा स पुनर्विष्णुपादयोर्मुनिसत्तमा
पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागत अथ विष्णुस्तु स्तमुत्थाप्य बभाषे सुनृतं वचा विष्णुर्वाच न खेदं कुरु मे भक्तवत्सत्वं नात्र संशया शृणुतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात् निरह्यस्तेन भविता शिवाशं ते विधास्यति यत्काशीशिवचो वित्थं मद्मोहिता स दत्त्वा दृशं ते फलं कर्म फलप्रदा शिवेच्छयाखिलं त्यातं कुर्विथं निश्चितां मतिं गर्वापहर्ता स स्वामी शङ्करा परमेश्वरा परं ब्रह्म परात्मा स सच्चिदानन्दबोधना निर्गुणो निर्विकारी च रजसत्त्वत्मा परा स एवादाय मायां स्वां त्रिधा भवति रूपता ब्रह्मा विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणोऽपि सा निर्गुणो त्वे शिवाहो हि परमात्मा महेश्वरा परब्रह्मा वयोनन्तो महोदेवती गीयते तत्सेवया विधिसृष्टा पालको जगतामहम् स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्ररूपेण सर्वदा साक्षी शिवस्वरूपेण मायाभिंस निर्गुणा स्वेच्छारी संविहारी भक्तानुग्रहकारका शृणुतवं नारद मुने सदुपायं सुप्रदं सर्वपापापहर्तारं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा त्वयक्ता संशयं सर्वं गायनं शङ्कर सद्यशा शतं नाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमति जप यज्पित्वा धृतं सर्वं तः पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णु पुनः प्राह दयान्विता मुनेन कुरु शोकं त्वं तव्या किञ्चित् कृतं न हि स्वेच्छया कृतवानशं शम्भुर्कृतं सर्वं न संशया अहार्षीत त्वन्मतिं दिव्या कामकलेशं दातस्ते त्वन्मुखाद्यापया चक्रे शापं मे स महेश्वरा इत्थं स्वचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युञ्जय कालकालो भक्तो द्वारपरायणा न मे शिवसमानोऽस्ति प्रिये स्वामी सुप्रदा सर्वशक्तिप्रदो मेऽस्ति स एव परमेश्वरा तस्योपास्यं कुरु मुने तमेव सततं भज तदृश्य शृणु गाय त्वं कुरु नित्यं तदर्चनं कायेन मनसा वाचा स शङ्करमुपैति भो स पंडित इति ज्ञेय स जीवन्मुक्तुच्यते शिवेति नामदावग्नेर्महापातकपर्वता भस्मीभवन्तय नायास्तात् सत्यं सत्यं न संशया पापमूलानि दुःखानि विविधान्यपि तानि यथा शिवार्चनेक शन्यानि नान्यनश्यानि सर्वथा स वैदिका स पुण्यात्मा स धन्य स बुधो मुने यः सदा कायवाक्कीच्यते शरणं याति शङ्करं भवन्ति विविधा धर्मा येषां सत्यफलोन्मुखा तेषां भवति विश्वासस्त्रीपुरान्तः पूजने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवपूजया भुवि तावन्ति पापानि न सन्त्येव महामुने ब्रह्महत्यादिपापानाराशयोऽप्यमिता मुने शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं शिवनामत्तरिं प्राप्य संसारावधि तरन्ति ते संसारमूलपापानि तस्य नश्यन्त संशयं संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशे क्षोजायते ध्रुवं शिवनाम अमृतं पेयं पापदावान् लार्धिते पापदावाग्नितप्ताना शान्तिस्तेन विना न हि शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिलुप्ता संसारदवमध्येऽपि न शोचन्ति न संशय
न भक्तिशङ्करे पुंसा रागद्वेषताप्तमनां तद्विरुद्धजनानां हि मुक्तिर्भवति सर्वथा अनन्तजन्मभिर्येन तपस्तप्तं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे जातापि शङ्करे भक्तिरन्यसाधारणी वृथा परन्तवप्यचारेण शिवभक्तिरपेक्षिता यस्य या साधाराणि शम्भुभक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव मोक्षसुलभो नान्यस्येति मतिर्मम कृत्वा प्रियन्नन्तपापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्वपाप विनिर्मुक्तो भवति एव न संशय भवन्ति भस्मासादृक्षाद्वदग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शङ्करानामज्ञानपि यो नित्यं भस्मपूताङ्गो शिवपूजोन्मुखो भवेत् स तर्ह्येत्व संसारं पारमति दारुणं ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मान् बहुन न लिप्यते नरापापैर्विरूपाक्षस्य सेवका विलोक्य वेदानखिलाञ्चैवस्य वाचनं परं संसारानाशोन्मुपाय इति पूर्वी विनिक्षितम् अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथाविधि साम्बं सदाशिवं भक्त्या भजनित्यं महेश्वरम् आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोदूल्य सादरं सर्वश्रुतिश्रुतं शैवमन्त्रजप षड्क्षरं सर्वाङ्गेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षाचिवल्लभान् धारयस्वाति सदक्तया समन्त्रं विधिपूर्वकं शृणु शैवीं कथां नित्यं वद शैवीं कथा सदा पूजस्वाति यत्नेन शिवभक्तान् पुनः पुनः अप्रमादेन सततं शिवेकाशरणो भव शिवार्चनेन सततमानन्दं प्रापयते यथा पुरुषाधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजो शिवतीर्थानि विचर प्रथमं मुनिसत्तम पश्यान् महात्म्यमतुलं शङ्करस्य परात्मना गच्छानन्दवनं पक्षाचम्बुप्रियतममुने तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तिता नत्वा स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि ततक्ष भक्तानूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके स्वकामार्थशासनामं भक्तिता नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विद्धिं स जनकं मुने द्रष्टवयं विशिवमाहात्म्यं बहुश प्रीतचेतसा स शैव प्रवरो ब्रह्मा महात्म्यं शङ्करस्य ते शाविष्यति सुकृत्या शतनामस्त्वं च हि अद्यतस्तवं भव मुने शैव शिवपरायणा मुक्तिभागी विशेषेण शिवस्तेषं विधास्यति इत्थं विष्णुर्मुनिप्रीत्याहापुदिश्य प्रसन्नधि संहृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा तत्सर्वन्तर्धीयता इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टुपाख्याने नारदस्य विष्णुपदेशवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः।